Hello students. In today's lecture, lecture 3 of coal and petroleum, we are going to study about petroleum and gas. We have already discussed in the previous lecture about the formation of coal and the types of coal on the basis of their carbon content and the characteristics. So let us start with petroleum. So what is petroleum? It is nothing but a type of fossil fuels. पेट्रोलियम इन द सेंस पेट्रोल नहीं, हाँ, पेट्रोलियम और पेट्रोल को कनेक्ट मत करना. पेट्रोलियम में से जो प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल ये सब सेपरेट होता है, तो दे आर द डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. सो पेट्रोलियम and natural gases are formed from the remains of tiny organisms that died millions of years ago. Okay. Now tiny marine organisms, marine in the sense sea organisms. ठीक है. मराइन ऑर्गेनिज्म से ये लार्ज लैंड एनिमल्स को रिलेट मत करना, जैसे डायनासोर्स एंड ऑल्स को रिलेट मत करना. दे आर प्रॉपर मराइन एनिमल्स. ठीक है. सो हमको ओशियंस में से ही मिलता है आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ओके. सो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यूजेस आप यूज़ करते हो, दोनों का आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हो. यू आर यूजिंग पेट्रोल इन द व्हीकल्स एंड नेचुरल गैस फॉर कुकिंग योर फूड्स. सो बोथ आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर अस. सो petrol and diesels are obtained from natural resources called petroleum. Okay. What does the word petroleum means? Petra means rock and oleum means oil, because the petrol is digged from the marine सीज में से. तो सीज में एक लेयर आ जाता है, रॉक्स लेयर्स, वहाँ पे आके आपका ये ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट आके सेटल हो जाता है, इसलिए उसको पेट्रा रॉक से डिराइव किया गया वर्ड, because as it is mined from between the rocks under the earth, oceans में से. So how is the formation of petroleum and natural gas? Let us see what is the formation. As we have seen the formation of coal, we are going to see the formation of petroleum also, both petroleum and natural gas. So what happens, the process of formation of petroleum and natural gas is shown. So a layer, the tiny marine organism died and settled on the ocean of layer. Tiny marine organisms, they died, मर गए, about 300 to 400 million years ago, and they settled down. So over the time, this layer of dead organisms was covered, and beneath, as you can see in the second figure, they are covered, they died, and that part is covered with other sediments, and at the enormous heat and pressure, एक टाइम और प्रेशर जैसे से बढ़ा, तो उसकी वजह से they are transformed into the petroleum and the natural gas, and rising through the rocks like rising through the porous rocks like sandstone, petroleum and natural gases reached a layer of impermeable rocks and were trapped below it. As you can say, trapped gas, trapped oil, they were trapped upon the layer of the rocks, and using the oil and gas drilling, they have been extracted out. Okay. Now petroleum and natural gases are extracted by drilling through the impermeable rocks. Now petroleum or crude oil is a complex mixture. What is petroleum or crude oil? This type of figure, as you can see in your textbooks, okay, this is the oil rock layer, water, oil and gas, they have been drilled out from that. Okay. So let us see refining of petroleum. How is petroleum refined? So petroleum or crude oil is a complex mixture है वो. सॉलिड में दे हैड अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर मीन्स बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होना, सॉलिड भी है उसमें, लिक्विड भी है, गैसेस, हाइड्रोकार्बन्स इन द सेंस कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर. So it is separated into useful substance through a process called refining of petroleum. Now as you extract that petroleum products, जैसे ही उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है कि जैसे हमने उसको एक्सट्रैक्ट करके मराइन सीज में से निकाला तो हम तुरंत उसको यूज़ करने लग जाएंगे. नो, इट इज़ नॉट यूज़फुल एट दैट टाइम, because it is a mixture of many layers. As we have said, soil का है, liquid का है, gaseous का है. It is a mixture of many layers. So they have been separated into useful substance through a process known as refining of petroleum. Okay, so let us see what happens in refining of petroleum. So this is done. How is refining of petroleum done? It is done in the oil refiners. किस में किया जाता है? Oil refiners में किया जाता है. एंड इन दिस प्रोसेस पेट्रोलियम को हम हीट करते, एक यूटेंसिल जैसा सेटअप होता है, ये सेटअप जैसा देख सकते हो, दिस इज यूटेंसिल सेटअप्स. इन दिस यूटेंसिल सेटअप, दिस प्रोसेस
is heated to 400 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हीट प्रोवाइड करते होंगे आप सोच लो, 400 degree Celsius, and introduced in a fractionating column which is tall cylindrical structure fitted with horizontal trays. ये एक टाइप का fractionating column है, trays देख सकते हो, fitted with tall cylindrical like structure. So crude oil is been inserted in that, heated, and जैसे जैसे वो heat होता है it is been separated into, जैसे जैसे उनका टेम्परेचर आता है, दैट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर यू गेट द यूजफुल प्रोडक्ट्स. एट 370 डिग्री सेल्सियस फ्यूल ऑयल सेपरेट हो जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस में वो आपको डीजल सेपरेट हो जाएगा, फिर 200 डिग्री सेल्सियस में कैरोसिन सेपरेट हो जाएगा, 150 डिग्री सेल्सियस में पेट्रोल सेपरेट हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस में ब्यूटेन और प्रोपेन सेपरेट हो जाएगा. सो हीट करके उनके पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पे they get started separating. Okay, so we use a fractionating column. What happens over here, इसमें क्या होगा, as the vapors of the petroleum rises inside the fractionating column, they cool and condense at different heights. As you can say, vapors क्या होगा, हीट करना स्टार्ट करेगा, राइज होना स्टार्ट करेगा, फिर एक टाइम के बाद वो कूल होगा, कंडेंस होगा at different heights depending on their boiling points, as you can see, and they are collected at different trays. And the uncondensed, that is a petroleum gas, pass out of the column. मतलब जो ठंडा नहीं होगा वो क्या करेगा, इस पेट्रोलियम उसमें से बाहर आउटलेट में से बाहर आ जाएगा, and that is nothing but your petroleum gas. And the refining process is also known as fractional distillation. इस refining process को हम क्या बोलते हैं, fractional distillation. As you know, petroleum gas used in the LPGs, ये जो ब्यूटेन एंड प्रोपेन है ना, वो आपका पेट्रोलियम गैस है. तो पेट्रोलियम गैस हम लोग LPGs में यूज़ करते हैं फॉर डोमेस्टिक पर्पस. पेट्रोल वी यूज एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, इन ड्राई क्लीनिंग एक्सेट्रा, and various many things and different things. Kerosene is used as a fuel in lamps and stoves. Jet fuel भी यूज़ होता है, ठीक है. Diesel is used as a heavy fuel material for heavy transports, motor vehicles and generators में हम diesels यूज़ करते हैं. Then fuel oil यूज़ होता है पावर स्टेशन में and ships में. Lubricant oil, paraffin, wax and aspartate is used in the यहाँ पे यूज़ होता है aspartate मतलब for making use roads में यूज़ होता है वो टाइप का ऑयल, ठीक है. So there are various uses of this petroleum and how it is separated. समझ में आया. हम fractionating column लेते हैं, that is a cylindrical in height. तो इसमें क्या होता है, वो हीट होना स्टार्ट होता है, वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो वेपर्स थोड़े थोड़े जैसे जैसे कूल डाउन होंगे तो वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे आके सेपरेट आउट होना स्टार्ट होंगे, एंड जो कूल नहीं होगा वो दैट इज नथिंग बट योर नेचुरल गैस. So I hope the formation of petroleum and natural gas is clear to you. In the next class we are going to study natural gas and the limitation of fossil fuels and the conservation of fossil fuels. For today this much is enough. Okay, thank you.